starting the recording, and let's get started. Okay. So first of all, right, you need to understand, right, when we talk about Lambda. So can anyone tell me any idea or any, right, you have taken an overview of Lambda? Can anyone want to define Lambda? So where you will use it, right? Why we have Lambda? What is the reason behind, right, creating this compute? Uh, yeah, actually, this is technology which we call serverless. Hmm. So basically, serverless is a new feature in which the developers don't have to manage servers. We just need to deploy the code and in a function form. So basically, it is equal to the function as a service. Correct. Yeah, That's true. So, yeah. So yes, Rajiv, you perfectly said that. Anything you want to add, you can complete. Yes, go ahead. Uh, yeah, so basically, serverless in AWS basically provides a step functions and DynamoDB, AWS API gateways, S3. So these kind of services, it includes Lambda also. Yeah. So Rajiv is doing a lot of study, right, regarding lambdas. So that counters. So yes, he said perfectly. Right. It is kind of a. Uh, uh, I would say, right. Not now. It's very new. But when it was started, right, then the people were thinking, right, why I should manage a server, or why should I provision a server, right, to running my code? Could it there be something where I will just write code and submit, and all the server provisioning management, right, of server would be taken care, right, by someone, right, who is right, managing my infrastructure. So I want to remove an overhead of managing server. So serverless, I told you, right, I think in the last lecture also, while discussing a bit about it, that serverless doesn't mean that, right, there are no servers involved, right? Servers where would be there, right, where code will get executed, but yes, you are not managing them, you are not, right, provisioning them. Take an example, right, of DynamoDB, S3, right, Cognito, and rightly said, API gateway. So these are what good example of, you can say, right, a serverless services that you can use to, right, create an application. And right now there is a run, right, in organization to have an application which is, right, serverless, where, right, if I create a certain automation around an, right, application in which the server maintenance overhead is very minimal, right, everyone is running toward that approach. So, and remember, Lambda is capable of getting integrated with some of the main services, right, that are there. So I will highlight few of them. For example, API gateway we talked about, right? Kinesis is there, right, for streaming, for DynamoDB as a, right, serverless database, S3, right, as a storage, right, IoT Internet of Things, right, which is also, right, AWS provides CloudWatch events, right, CloudWatch logs, which I talked, right, initially when question was put up. SNS is a simple notification service, right? For right, emailing, right? If anything, right, alerting or for whatever notification, right? You can use SNS, right? User management like Active Directory or, right, SAML kind of stuff. You can use Cognito, right? And then there is a simple queue service also, right? And those are the different services, right, where Lambda can easily integrate, which gives you, right, you can say, a holistic view, right, that how we can create a serverless application. So this is one, right, very important thing to be aware of. Now I will just draw something which I know many of you would be, right, thoughtful of or aware of, right, how I can think of a serverless application and how things, right, will. It's a very simple uh, representation, okay, that I'm going to do, and where you will see that the importance of Lambda out there as a serverless, right, component in that application. Now there is a user, okay, and this user, right, wants to, right, access, right, a page where basically he can submit some form, and as per the form submission he will get certain, right, output, right? And obviously the page that user want to access could be in some server, right? अगर देखा जाए तो EC2 में मैंने एक वेब सर्वर डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे पिक्चर में क्या आ गया, एक सर्वर आ गया मैनेजमेंट. सो आई डोंट वांट EC2 kind of stuff. So I will use right some storage service called S3, right, in which I can also host a static web page, right. So मैंने यहाँ पे S3 यूज किया एक स्टैटिक वेब पेज होस्ट करने के लिए. ठीक है. यूजर ने क्या क्या हिट किया, वॉट एवर द डोमेन के साथ S3 हम राइट बाइंड अप कर सकते हैं, राइट, ए रिकॉर्ड करके. तो ऑब्वियसली यूजर को जब पेज एक्सेस करना होगा, राइट, मान लो फॉर्म फिलअप करना है, कुछ फॉर्म फॉर्म पेज यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है S3 में, एक HTML पेज डाला हुआ है जो विच इज अ फॉर्म. तो यूजर ने इसको एक्सेस किया है S3, तो यूजर को ऑथेंटिकेशन वगैरह भी चाहिए कि इसके अंदर जाने के लिए. तो आई कैन राइट यूज सम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, राइट, लाइक कॉग्निटो, राइट, विच इज एन अगेन एन AWS सर्विस. तो जैसे इसने रेस किया सबसे पहले कॉग्निटो से, ये क्या हुआ, ऑथराइज हुआ. कॉग्निटो ने जब इसको ऑथराइज किया, राइट, तो यूजर वो S3 पे गया और उसके पास एक फॉर्म बेस्ड पेज मिला इसको यूजर को. तो यूजर ने वो फॉर्म फिलअप किया उस वेब पेज पे. ऑब्वियसली जब फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो क्या करेगा, ही विल डू सर्टेन राइट REST API और राइट गेट पोस्ट एक्टिविटी from that page. Now when user hits that, actually you are hitting some REST API. In that case, right, we see right there is an API gateway, right, which comes into the picture. So say Control Z, Z. Yeah, I will bring it here, right? Say this is your API gateway, okay? And obviously, API gateway will be handling what? Your REST API, right? REST API will hit this API gateway, which is your right interaction, right, with your API. So this is REST API. Okay, I will write here. REST API. Okay, so ये REST API गेटवे से हिट हुआ, राइट. ऑब्वियसली API गेट पे क्या करेगा, वो फॉर्म फिलअप किया, ऑब्वियसली पोस्ट रिक्वेस्ट किया तो उसको कुछ चाहिए फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ आउटपुट चाहिए. तो API गेटवे किसको करेगा, कोड, किसी कोड को रन करना चाहिए जिसके कारण कुछ उसको रेस्पॉन्स मिले. तो लैम्डा ऑब्वियसली फंक्शन. हाँ, यहाँ पे वो लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा. तो ये लैम्डा फंक्शन किसके साथ इंटीग्रेटेड है, API गेटवे के साथ है, राइट. तो अब जो यूजर ने डाटा दिया है ना, यूजर ने जो डाटा दिया है वो क्या होगा, स्टोर करना होगा कहीं पे ना. तो मैं अपने लैम्डा के थ्रू वो डाटा जो भी आएगा रिक्वेस्ट में, मैं उसको स्टोर करवाऊंगा किसी डेटाबेस में, राइट. तो ये डेटाबेस मेरा मान लो डायनामोडीबी है. Deepak, hello Deepak. यस प्लीज. Sorry to disturb you, but actually I have some urgent work, so I want to leave this meeting right now. So when this video will be available for learning? मे बी राइट बाय इवनिंग टुडे. Yeah, ओके. it will. Yeah, so I will complete it on today evening. ओके, या नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक्स विशाल फॉर इन्फॉर्मिंग अस. Yeah. Okay, so typically if you see what actually we want to represent from it, I want to represent from it, right, where lambda comes right in picture in case of right serverless application. If you are designing, you can think of very simple serverless right application approach, and right we can design something like this, right, which is serverless. Because for S3, I'm not managing any server. For Cognito, I'm not managing any server. For API Gateway, I'm not managing any server. For Lambda, I'm not managing any server. For DynamoDB, I'm not managing server. And I am able to do some post get request, right, and application specific stuff. That it means it is a serverless application. Any question over it? No? तो समझ में आया कि नहीं आया? Overall Just got it. intention is right very clear. है ना? Sonia, yes, question? No. Okay. Deepak, one question here. Like you said this DynamoDB. So this is also serverless or like maybe Yes, some instance. yes. For DynamoDB, you don't need to right have one instance in which you will install the DynamoDB. You are not going to do that, right? It is just a service, right, with API.
in which you can create your schema based key value pairing, where there would be key identity and you can store and access them, right? And all this maintenance will be done by AWS. You are not managing any. Okay. Deepak, this DynamoDB will be the this is no structured query language, right? It's a Yes. normal, simple. Yes. It is basically a document DB. We generally think DynamoDB is a part of a document DB, right? So yes, that kind of relational stuff you will not find much, right? Where foreign key association or something like that. It is something like a structured data I am storing in, right? Fetching on the basis of key, right? So But Deepak, what about relational database? So if we are using relational database, so then For that, we have one service, RDS, right? correct. In, So we can. in That's perfect. Fine, right? yeah. Sonia, you're So for correct. RDS also, are we not going to have the server there, serverless computing So we can yes, see? there would be server for RDS. There would be an instance, but you are not managing it again. Okay. So again, it is also a kind of a serverless. So all Yeah. the patching and everything, would be done by the snapshot creation. All this configuration you will do while creating that RDS instance of size, what size you want, right? All those configuration you will pass. But in terms of management, yes, you are not managing them. That will be managed by AWS. Okay. Got it. So I would say partial feeling like a serverless, right, about RDS, but yes, it is again can be categorized as a right because I'm provisioning there, right? I am provisioning an instance, but in serverless you should not also provision them. Correct. Correct. Okay. Now I will come. So we discuss a lot, right? Now think about how you will differentiate, right, an EC2 instance with a Lambda. EC2, we have to manage and provision. For the Lambda, once we given the code, then we need to manage. And for the compute, we can get benefits on the means cost also. Correct. That's true, right? And limited by resources also, right? If you Yes. see, right, in a very broader And picture. Uh, yes. so, And the Lambda also have the concurrent execution also, so it will be the much faster than our EC2. Means if any application or something we are hosting on the EC2 as compared to that Lambda will be much faster because it will have a concurrent executions also. yes, And yes. These are the few, right, correct facts that, Sonia shared. Few things, right, which we should, right, aware of. Then when I say that limited by resource, actually I mean what, when you run a program, right, it needs certain amount of, right, memory, right, and CPU. Hmm? Correct. So obviously, if I choose a machine like EC2, right, and if my demand increase in terms of CPU cycles and memory, obviously I need to choose what I need to choose another type of machine, right? So I need to provision another machine to run the same program, right? So obviously, you will be limited in case, right, you have to think a lot to switch to some other, right, type of instance that you have to do. But in case of Lambda, you don't need to worry about, right, the CPUs and, right, memory you can configure in case of a function where you can, right, give your code or function, right, amount of memory, right, and you can reach up to some I think 10 CB or something. We can check that it's more than that, I think. So yes, you can configure that, right, at a runtime, right? It's a configurable thing. This is one thing. Second, think about scaling. We did, right, auto scaling. Now compare in case of Lambda with EC2. Any thoughts? Uh, yeah, it means add or remove servers Hmm. uh, But because in case of EC2, you need to create a code, right, or create that, right, auto scaling. Then only, right, this kind of, right, automated addition and removal of server will happen. Correct. yes, But in case of Lambda, you don't need to do that automation also, right? It's pre-automated for you. okay, Okay. If say number of, right, API requests to Lambda had increased, right, a lot, and, right,
lot of requests is coming, then what will happen? AWS is going to manage it for you, right? It is going to create right scaling for you. You do not need to worry on that. Okay, this is one thing. Another important fact, right, is time limitation. Who is limited by time? EC2 or Lambda? Lambda. Correct. So, what is the limitation of time? 15 minutes. Our code should not go beyond that because that won't be a good practice for the Lambda. It should Yeah. be before that. So your processing of your function, if goes more than right 15 minutes, your Lambda will time out. Okay. So obviously it is limited by time. This is one of the disadvantages you can say. But yes, it is a purposely right given because you have to use Lambda for right certain purpose, not for running right certain type of workloads which will need some wait operation or right wait operation of more than right 15-20 minutes, or entire operations have certain wait times of right more than 15 minutes. So obviously it will right time out. So these are the right important facts that you have to carry on while right learning Lambda. Another thing, right, in terms of language support, obviously if I'm going to write function, right, I can write in some different right languages. So can anyone tell me, so what kind of language support it have? Yeah, Node.js, Python, Mm-hmm. Python, Ruby. Golang. Java. Yes. Okay, yeah, Golang, right? So it has right wide support for all the popular languages, and also right recently right Lambda had right created one mechanism through which you can use right certain kind of code build pattern, right, in which you can right run your code right with a configured. You will ask them right, I need this language, and say it is not supported by Lambda, right? In terms of choosing runtime, we call it runtime, right? Whatever language support that we do. So if it is not there, you can write submit, and right they will create instance at their backend by them with right that language is taught. So obviously in certain way I will say right it supports right most of the languages, right? And obviously custom languages can also be right supported by Lambda. Okay, now let's look into AWS console about the service, and let's play around right Lambda, how to create functions, right? We will see about roles, right? What kind of different roles right we can attach or something right around it, so that you can understand and ask questions about it. So obviously if I go to my services right in compute, you can see right Lambda is there, right, where I am hovering. I'm clicking over here. Okay, so I'm going to create right one Lambda. So if you go to the page and there are no function, right, you will get some right learning page, and there would be a right create function written. Since I already had created function in this account, so you can see right create function, right? You can say uh, button or right this uh, orange colored stuff. You will see right. Click over it. It will take you to the right. Now, in earlier days, right, we do not have that much options. Now we have, right, so many options. We have basically author from scratch and a blueprint with limited blueprints. Now we have container image. This is what I am talking about, right? For if you have some language specific right need, you can use this container image, right, which will have right that particular language support already, right? And you can use for any language. You do not need right a specific right chosen runtime. So this is one of the benefits of right this container image. And use a blueprint is you can say right a sample codes already written, and you can get started using those blueprints. So for example, if I select this, right, you can see that typical different kind of right code examples are given. And if you're much interested in Python, you can filter them here by typing right Python, and you will get all the Python related right examples, and you can start learning right
choosing one, and right, it will set up the code and everything, right, which is pre-written, and you can use. So obviously it is a useful entity, right, but for I say beginner, we should also, right, learn from author from scratch, which we will do, right. But these are, right, specifically configured with everything, मतलब सब कुछ उसमें होगा, जो जो वो करने वाला एक्टिविटीज के लिए रोल, राइट, ये सब है. बट जब स्क्रैच से करेंगे तो हमें वो सब अटैच करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सीखना author from scratch से चाहिए. And once you have knowledge, you can use, right, some blueprint, right, search a blueprint, right, that you are developing, right, and you will get one example, and over that example you start writing your actual code. Okay. And serverless app repositories already written, right, applications, right, and you can, right, look for those application here and, right, start coding here, right, for your development. तो similar code आपको अगर मिल गया तो आप उसके ऊपर build up कर सकते हो आपका code, right. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, right, examples मिल जाएंगे, ठीक है. So there are many, right, pages, so you can see, right, and you can search for specific need, you can search here, right. Yes. So this page contains this information. So we are going to author from scratch. Now here comes, right, what function that you want to create, the name of that function. Say for example, my match function. Okay. So say this is my function name, and see, it uses only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces. And this is the runtime, right? So by default, it is showing Node.js, but if you click here, you can see, right, this all, right, language is supported. And so custom runtimes, right? This is Amazon Linux and Bootstrap, right? Which basically comes up with that thing, right? Image stuff, right? So this is a custom runtime, which they provide you with an Amazon Linux baked with many other, right, runtimes inside it. So we are going to use Python. So I am using the latest Python 3.8. Okay. Now here comes the permission part. Okay. And if you see, right, it says by default Lambda will create an execution role with permission to upload logs to Amazon CloudWatch logs. So जो basic execution role है वो क्या CloudWatch logs के लिए दिया हुआ है. अगर आप create a new role करोगे तो वो वही बना के आपको दे देगा. But अगर आपने already plan किया है कि मेरे को अपने Lambda में ये एक्टिविटी करनी है, तो इस हिसाब से आप existing role चूज कर सकते हो. यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको आ जाएगा. जैसे सर्वरलेस लैब रोल मैंने बनाया था, राइट, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ अगर मेरे लैब में मुझे करनी है, या मैं नया बना सकता हूँ, राइट, और उसको अटैच करवा सकता हूँ यहाँ पे. सो दिस आर द वेरियस, राइट, एग्जांपल. से आई विल यूज create a new role, ठीक है. सो दैट इफ आई डू सर्टेन एक्टिविटी, कोड में जो लिखूंगा जहाँ पे कोई सर्विस यूज करूंगा और वहाँ पे मुझे एक्सेस इश्यूज आएंगे, तो राइट, आई विल लेट यू नो कि कैसे करके हम उसको रोल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ एडवांस सेटिंग्स में कुछ नहीं है. वीपीसी के साथ अगर आप अपना फंक्शन किसी वीपीसी नेटवर्क पे रन करवाना चाहते हो, वो कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क रिलेटेड योर कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर इन द एडवांस सेक्शन. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपना एक वीपीसी पे काम कर रहे हो, राइट, और आप चाहते हो कि वो फंक्शन, राइट, आउटसाइड कहीं रन ना हो, जो भी वो सर्वर चूज करे AWS विद इन दैट नेटवर्क हो, राइट, तो ऑब्वियसली वो वीपीसी पे आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो लिमिटेशन डाल सकते हो कि मेरे मेरे नेटवर्क पे रन हुआ, तो सिक्योर्ड हो गया थोड़ा सा, राइट. So these are taken care in this advanced settings. Code signing configuration is Deepak, here one question is there. Is by default Lambda will run in AWS network, right? AWS yes, VPC. default So VPC. yeah, so if I have one VPC, means my private subnet, and I want to stop the server via this Lambda function, okay? But I'm not giving that VPC details and all. Still, I can do that with the role definition Yes, in IAM, right? I correct. can give the full EC2 access for the particular region, and then I can do that, right? Perfect. Yes, you can, right. And even, right, you can do cross account also, right. So cross account, but only you need to, right, have that trust relationship, right, set up with that account, right. In the role, you have to, right, have two roles. One roles in, right, your main account, another role in, right, your target account. Okay. And in that role, there should be an assume policy, so that, right, you have rights to, right, do certain action on another account. So this kind of setting configurations are also there, right. So yes, So no need to means deploy that Lambda in the same VPC. We can do no, it via IAM need, also. no need. It is just for secured reasons, right, that I am choosing, right, a specific VPC, Oh. right. That is only the concern. Else, in terms of right, actions, role will take care of it, right.
If your Lambda has permissions, it will able to do. Okay. Now let's move to create function. Okay. So it will doesn't take much time, but it is taking time. My bad. So see, I got my right page in which my function is written. Few things which are very important. Obviously, see, these are the things, right, that you should be aware of. So code contains your code. The test contains what you want to test out of this code. If you write some code here and you want to check test, you can use test, right? Or even directly from here, right, you can test it. We will do that. Monitor is related to CloudWatch. Okay. Configuration related to your code roles and everything, right? Or the right, I told you limitation of time, right? Can be configured memory, right? All this configuration can be done here, right? Aliases is a similar name, right? Generally I have not used much, right, frankly speaking. So all right, so अगर आपने कोई alias attach किया है इस function similar function, right, किसी और नाम से किया तो आप कर सकते हो. And this is a version of your code, right, that you are writing. This is the main, right, thing, right, that you should be aware of. And if you see, this function can be attached to some trigger. Okay. And can anyone tell me what could be trigger? क्या होगा ट्रिगर से, क्या होगा फंक्शन को, क्या मिलेगा? It would trigger the event. करेक्ट. तो अगर आप ये एग्जांपल में देखोगे, जो हमने डायग्राम बनाया, let me, can I move this? ओके, अगर ये जो डायग्राम देखोगे, इसमें क्या है, एपीआई गेटवे क्या कर रहा है, लैम्डा को हिट कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली लैम्डा के लिए ट्रिगर एक्शन कौन दे रहा है? एपीआई गेटवे. तो API एपीआई gate. गेटवे कुछ तो इनपुट देगा लैम्डा को, तभी वो एक्शन करेगा, है ना? Right? So obviously this event, right, mean by this. Now there could be many other events. So AWS have right in CloudWatch called events. And in events, what happened? For example, I am working in code commit, right? AWS developer tool कैटेगरी में आता है वो. तो कोड कमिट में मैंने कुछ एक्शन किया, जैसे मैंने कुछ कमिट एक्शन किया, या राइट मैंने डिलीट एक्शन किया, रेपो डिलीट किया. एंड ऑन दोज राइट राइट एक्शंस, राइट, व्हिच इज राइट वेरी स्पेसिफिक टू राइट क्लाउड वॉच इवेंट्स व्हिच कैन बी कैप्चर्ड, और क्लाउड ट्रेल इवेंट्स, राइट, व्हिच कैन बी कैप्चर्ड. those events I can also pass it to right और कॉन्फ़िगर फॉर माय लैम्डा की एक इवेंट बनाया और वो इवेंट से मैंने इसको अटैच कर दिया. तो दोस काइंड इवेंट्स आल्सो कैन पुट पास राइट एंड इनपुट टू लैम्डा, एंड लैम्डा विल यूज दोस इवेंट टू प्रोसेस समथिंग ओवर इट. ठीक है. तो अगर आप कोड देखोगे, राइट, अभी इन्होंने एक सैंपल कोड डाला है. इस कोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा हैंडलर क्या ले रहा है, इवेंट ले रहा है, राइट. एंड एट व्हाट कंटेक्स्ट ले रहा है, राइट, कौन पास कर रहा है वो. तो ऑब्वियसली आपका जो एक्चुअल डाटा है वो किस में आएगा, लैम्डा को इवेंट में मिलेगा. You got my point? Yes. So obviously I will use that event, and then I can right make use of those event in my code to process things. We will do with an example. So for example, before right writing code and executing, I want to show you few configuration thing, and then we will do, right, so that you would be aware. So obviously you can see here some configurations below page. Let me minimize it. So here runtime setting is what your Python 3.8 that we selected, and then there is a handler info. Your code name is what, lambda function, and right, what in the lambda function need to be called, this lambda handler. For example, if I'm writing code and I'm changing this, for example, I say right, मैंने कुछ वैसा पुट आइटम करके इसका नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने डिप्लॉय किया. अगर मैं ये कोड को भी रन करूंगा तो ऑब्वियसली रन नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या मैंने डाला हुआ है, हैंडलर इन्फो. क्या लैम्डा फंक्शन में किसको कॉल करने के लिए, लैम्डा हैंडलर को. बट यहाँ इसमें तो लैम्डा हैंडलर है ही नहीं, यहाँ पे तो मेरा फंक्शन नेम क्या, पुट आइटम है. तो अगर मुझे इस तरह का कोड मैंने डिप्लॉय किया है और कर रहा है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा हैंडलर करेक्ट हो. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लैम्डा हैंडलर की जगह क्या लिखूंगा, पुट आइटम, then it is correct. By default lambda handler रहता है, but if you want to give very specific name, right, that you want to do something, right, with that. Sorry, यहाँ पे देखो पूरा आया नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को वापस से लिख के डिप्लॉय करना पड़ेगा. कई बार ये लैम्डा में ना है, अगर आप पूरा
डिप्लॉय होने में टाइम लगा और आपने आगे कोई एक्शन कर दिया तो वो आधा अधूरा लेता है। अभी इधर में मेरा देखो पुट आइटम है और इधर भी मेरा पुट टाइम क्यों किया मैंने यार पुट आइटम sometime I have multiple thoughts running on my minds. So deploy right put underscore item and देखो मैंने यहाँ पे भी अपना जो हैंडलर है लैम्डा फंक्शन मेरा कोड है और पुट आइटम कर दिया। अगर मैं अपना कोड नेम चेंज करता हूँ यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ माई कोड, ठीक है, और इसके लिए मुझे बाहर इसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय किया, अभी भी मेरा कोड रन नहीं होगा। अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, मैं टेस्ट करने के लिए एक इवेंट बनाना पड़ेगा मुझे, राइट। तो मैंने मान लो यहाँ पे टेस्ट इवेंट बनाया जिसके अंदर की वन है, मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ नेम वन, ठीक है, सोनिया, ठीक है, नेम टू। तो मैं एक तरह का क्या, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट है ना, वो मेरा इवेंट है। जनरली इस तरह से इवेंट आएंगे, है ना। तो मैंने नेम थ्री क्लास, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह का ना टेस्ट इवेंट बनाया, इसको मैंने क्रिएट किया। अब मैं टेस्ट करूंगा, मान लो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप देखोगे तो जो मैंने टेस्ट नाम दिया ना वो टेस्ट सेलेक्टेड है, ठीक? मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, अनेबल टू इंपोर्ट मॉड्यूल लैम्डा फंक्शन, नो मॉड्यूल नेम्ड लैम्डा फंक्शन। ये किसको क्या लग रहा है, लैम्डा फंक्शन नाम का है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करेक्ट करना पड़ेगा, मुझे मेरा ये हैंडलर करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, my underscore code. So these are the few facts, right? Generally, right, though we are aware of lambda, right, while in practicing automating, right, we miss this information and sometimes we struggle a lot कि भाई ये क्या किया है मैंने। अभी मैं अगर लिखूंगा तो ये एक बेसिक कोड तो चल जाएगा, स्टेटस कोड 200 दे रहा है, मतलब चल रहा है, राइट। अभी इसमें हम आके कुछ और भी कीड़े करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हमारा इसका मीनिंग है। नाउ लेयर्स क्या है पता है आपको, एनीवन अवेयर ऑफ लेयर्स? फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करना है पाइथन का, अगर मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट यहाँ करूंगा, ठीक है, तो ये नहीं लेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि क्या है, थर्ड पार्टी जो इसके पास भी नहीं है, क्या बोलते हैं, लैम्डा के पास भी नहीं है। इस केस में देयर आर टू अप्रोच, either you create a layer of right request library and add that layer so that you can import this library। तो ऑब्वियसली एक जिप फाइल है, राइट, जो आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड करके या आप कहीं पे जिप करके उसको यहाँ पे एज अ लेयर डाल दो और वो लेयर पे आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ऐड अ लेयर बोला, ठीक है, तो ये बोलेगा अगर कोई कस्टम लेयर है तो आप कस्टम लेयर जो आपने खुद बनाया है रिक्वेस्ट के लिए आप वो कर सकते हो, नहीं तो AWS से अगर आप चूज करना चाहते हो, कुछ है जैसे लैम्डा पर्ल का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, अगर आप पर्ल यूज करना चाहते हो, राइट, या आप लैम्डा इनसाइट एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो तो ये। लेकिन जनरली राइट आप कस्टम लेयर्स चूज करोगे और कस्टम लेयर्स में क्या करोगे, आपने जो जिप अपलोड की है, राइट, वो जिप आप यहाँ पे यूज करोगे। इसके बारे में आप पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना, राइट। इफ आई विल डू इट, राइट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट, of doing that, but it is not something, right, you cannot able to do yourself। मीन्स यहाँ पे हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कोई पैकेज इंपोर्ट कर हाँ, सकते हैं, जैसे राइट? मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि कैसे, क्योंकि जनरली ये भी चीजें राइट, एक पाइथन के क्लास में एक्चुअली मैं आपको कुछ लेक्चर के टाइम पे मैं बताऊंगा कुछ फैक्ट्स, बट ये ऐसा है क्योंकि लैम्डा क्या एक एंटिटी है ना, जो कि आपकी मशीन पे नहीं है और सर्वर आपके पास नहीं है उसका, है ना, और आपको कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल डालनी है क्योंकि आप यूज करना चाहते हो लैम्डा में और लैम्डा के पास है नहीं, तो आपको उसको देना तो पड़ेगा ना। तो अगर मान लो यस। मैं एक कोड लिख रहा हूँ, मैं लोकली कोड लिख रहा हूँ, ये कोड को मैं डिप्लॉय करूंगा यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, यूजिंग व्हाट टेराफॉर्म, व्हाटएवर ऑटोमेशन। तो मान लो मेरा मेरा एक लैम्डा है, ठीक है, और इस लैम्डा कोड के अंदर में, ठीक है, मैंने कोड लिखा है, मेरा फंक्शन है, ठीक है, mkdir, वही मेरा फंक्शन डिप्लॉय होता है, ठीक है, mkdir माय फंक्शन डॉट py,
ठीक है, इसको मैं mkdir क्यों कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे मैंने लिखा से import, ठीक है, requests, और यहाँ पे मैंने अपना जो भी है राइट हैंडलर लिखा है, राइट, माय फंक्शन इवेंट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी रिक्वेस्ट कॉल किया, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल मैं जो डमी लिख रहा हूँ, राइट, डमी रिक्वेस्ट, मतलब कोड जनरली एक रिक्वेस्ट कॉल करेगा, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट और वट एवर, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट गेट और सर्टन यूआरएल, ठीक है, इसके अंदर में ये डमी कोड है, राइट। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दैट, राइट, मैं अगर लोकली इंस्टॉल करूं तो मेरा यहाँ पे कोड चल जाएगा, है ना, मेरा यहाँ पे कोड चल जाएगा, लेकिन लैम्डा के पास तो रिक्वेस्ट नहीं है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा एक पैकेज बना सकते हैं ऐसे करके। मैं यहाँ पे पिप, जो मेरा पिप है, ठीक है, पिप इंस्टॉल, ठीक है, मान लो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट, राइट, और मैं -t टारगेट क्या दूंगा, मेरा करंट डायरेक्टरी जहां पे मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, -t डॉट। तो अगर ये लाइब्रेरी pip3 का कोई लाइब्रेरी अभी सूडो देना चाहिए था मुझे बस, हाँ फिर भी, तो ये इसने कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है लोकली मेरे पाथ पे, ना कि राइट पाइथन पाथ पे। मैं वापस से यहाँ पे सूडो करके करता हूँ तो एरर नहीं आएगा। तो केमन्स लोकली लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहा हाँ, है। लोकली लैपटॉप में लोकल पाथ पे कर रहा है जहाँ पे कोड है, right, so that I'm not using the search path of python, like जैसे कि python path या right, जहाँ python इंस्टॉल के थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जाते हैं, right, और मैं करंट पाथ पे करवा रहा हूँ so that I can right use that library। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, right, तो ये मेरा का पूरा right रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसके साथ अगर मेरे लैम्डा को डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है, पूरा पैकेज के साथ, कोड के साथ, ये सारे उसी पाथ पे, तो ऑब्वियसली मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर पाऊंगा, हाँ, राइट। सो दिस इज वन अप्रोच। लेयर अप्रोच वुड बी व्हाट, मैं यही चीज क्या करूंगा, ये जो इंस्टॉलेशन का जो एक जिप फोल्डर बनाऊंगा और इस जिप फोल्डर को वहां पे क्या कर दूंगा, रिक्वेस्ट में लेयर में अटैच कर दूंगा और उस लेयर को मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा अपने लैम्डा के साथ, ठीक है। तो इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेशन, दिस प्रैक्टिस पिप इंस्टॉल -t डॉट वाला जो है प्रैक्टिस, ये ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, ठीक है। तो सी इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आई विल शेयर यू ओवर लेयर, राइट, एंड राइट दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन दैट विल हेल्प यू, बट रिमेंबर ये सब इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लैम्डा में क्वेश्चन पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं लेयर के ऊपर, ठीक है। क्यों, ऑब्वियसली लेयर का रीजन क्या है, the library that I want to use in my code which is not available, right, with the yes. lambda, I need, right, to install that and right attach with my lambda, है ना। so there are two approaches, मैंने दोनों अप्रोच बताया, एक तो लेयर में जिप करके डाल दो, और दूसरा क्या है, आप जब पैकेज ही करो कोड को इस तरह से करो कि उस पाथ पे वो सारे लाइब्रेरी पड़े हुए हैं, राइट, करंट पाथ पे, ठीक है। तो वो जिप फोल्डर में इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, वहाँ पे एक ऑप्शन जैसे अभी माई कोड है, राइट, इसी पाथ पे क्या होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के सारे जो मैंने बनाए ना, जो मेरे टर्मिनल में आप देख रहे हो, राइट, तो यहाँ पे दिखना चाहिए, ये जो सार डैट बिन है ना, वो कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, माई मार्च फोल्डर के अंदर में दिखना चाहिए। अगर ये सब इधर आ जाएंगे तो आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो ऑब्वियसली Yes. जब मैं कोड लिखूंगा, है ना, जब मैं मान लो क्लाउड फॉर्मेशन का कोड लिखूंगा, तो मैं इंक्लूड क्या करूंगा, लैम्डा फोल्डर को करूंगा ना, जहाँ मेरा लैम्डा, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, ये सारा कोड, माई कोड और वो जो है, और वो डिप्लॉय Yes. होगा इन दैट वे, राइट, इट विल बिकम इजी टू इंपोर्ट, राइट। सो तो दैट इज अ वहाँ बेटर पे अप्रोच। दिख जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। Now let's come to code part, right, and see few things again, right। मैं मेरे कोड पे आया, अभी मैंने इसमें इवेंट यूज किया, ठीक है। I just want to right, ये रिटर्न वाला पार्ट हटा देता हूँ, ओके। अभी मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट
इवेंट, अभी मैं इवेंट को यूज कर रहा हूँ, जो इवेंट पास करूंगा राइट उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा आउटपुट अगर मैं रन करूंगा तो? जो इवेंट में पास करेंगे। वो जो रिक्वेस्ट हमने मेरा इनपुट इवेंट कहाँ पे है? मेरा इवेंट मैंने कहाँ पे स्टोर किया टेस्ट करने के लिए? यहाँ पे है ना, ये टेस्टेबल है, टेस्ट इनपुट है, बट एक्चुअली जो आएगा वो तो ऊपर से आता है ना, बट मेरे को हाँ, टेस्ट करना है तो मैंने अपना एक डमी इवेंट बना दिया और वो इवेंट में यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। अभी मैं डिप्लॉय करके टेस्ट करूंगा it would display the names. तो अभी क्या बोल रहा है? नो मॉड्यूल नेम्ड रिक्वेस्ट, है ना, क्योंकि मैंने वो रिक्वेस्ट ऐड किया था तो उसको मिला नहीं है ना। उसका सॉल्यूशन तो हमने बताया लेयर के थ्रू होगा, तो ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। डिलीट, डिप्लॉय, अभी वो प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसने इवेंट प्रिंट किया, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होता एपीआई के रेस्पॉन्सेज जेसन फॉर्मेट में होते हैं या जो भी है। अभी मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को नेम वन चाहिए, जो मेरा आउटपुट है उसमें से मुझे क्या चाहिए, नेम वन चाहिए मान लो, तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी है, तो मैं जब पाइथन पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि कैसे होता है, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लो आई एम यूजिंग वन ऑफ राइट डाटा स्ट्रक्चर अप्रोच इन विच आई एम यूजिंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, और मैं उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा जेसन जो स्ट्रक्चर है वो डिक्शनरी सिमिलर टू पाइथन डिक्शनरी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम वन किया, लिखा है ऐसे स्ट्रिंग जस्ट फॉर डिस्प्ले, ठीक है। और मैंने वेरिएबल जो डिक्शनरी टाइप है मेरा उसमें से किया, मेरा डिक्शनरी का नाम है इवेंट, और इवेंट के अंदर जो की है मुझे चाहिए वो है नेम वन, okay. So this is right, I have written. So now in the output line, right, it will give me what basically name one, and I can store it right in some variable and return it also. For example, मैं यहाँ पे name equal to right event name one कर देता हूँ। रिटर्न और प्रिंट स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं है? अगर नहीं पता है तो either you have to wait for right by Python lecture, else you can go through my Unix video right and right dive yourself in right the function right part of that Unix, so you will understand some of the aspects कि रिटर्न एंड राइट इसमें प्रिंट स्टेटमेंट और रिटर्न क्यों यूज करते हैं वो आपको समझ में आएगा, बट मैं पाइथन के लेक्चर में आपको बताने वाला ही हूँ। तो मैं भी रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न नेम, ठीक है। अभी मैंने डिप्लॉय किया, टेस्ट किया, देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स में मुझे क्या मिला, आउटपुट राइट, एक्चुअल आउटपुट जो रिटर्न कर रहा हूँ, और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखा है देखो वहाँ पे मैंने फेच किया राइट, नेम उनको फेच किया। दिस इज क्लियर राइट। सो इवेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्ले अराउंड कर रहा हूँ, और मेरा जब मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ या कोड लिख रहा हूँ कोई सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली मेरा इवेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो देगा, और उस इवेंट के ऊपर मैं कुछ एक्टिविटीज करूंगा और राइट कुछ प्ले अराउंड करूंगा। नाउ आई विल गिव यू सिंपल ऑटोमेशन एग्जांपल आल्सो। से फॉर एग्जांपल EC2 के लिए एक बोटो लाइब्रेरी है राइट पाइथन का, सो बोटो 3 मैं EC2 करता हूँ, या S3 का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। EC2 का करते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा, इससे आपको ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, सबके लिए क्या है, बोटो लाइब्रेरीज लिखा हुआ है, तो मैं इस बोटो लाइब्रेरी पे गया। So this is how you will do automation also, right? How you can write very simple code with basic understanding. तो अभी यहाँ पे क्या ऑलरेडी आपके लिए कोड बना हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस पाइथन का फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शन स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है। अभी इसमें ये सारे राइट मेथड्स अवेलेबल हैं, और इसमें से मेरे को मान लो डिस्क्राइब करना है EC2 इंस्टेंस को, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ डिस्क्राइब वाले में कुछ है क्या EC2 इंस्टेंस के लिए। सो डिस्क्राइब एड्रेसेस है, डिस्क्राइब कैपेसिटी है, डिस्क्राइब EC2 और डिस्क्राइब इंस्टेंसेस करके कुछ है क्या, डिस्क्राइब इंस्टेंस स्टेटस है, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस करके है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डिस्क्राइब पहले, सबसे पहले तो यहाँ से ये उठा लो, आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, इंपोर्ट बोटो 3 करना होगा, और आपको ये क्लाइंट राइट ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये क्लाइंट बोटो 3 यूज करने के लिए बोटो 3 लाइब्रेरी यूज करो इसलिए। तो अभी मैं यहाँ गया अपने कोड पे, कम ऑन,
कहाँ गया भाई? वो नया पेज, नया ब्राउजर खोल दिया क्या मैंने गलती से? तो मैं कोड पे गया, यहाँ पे इंपोर्ट जेसन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट बोटो 3 किया, ठीक है। ये लाइब्रेरी यूज करना है AWS API को यूज करने के लिए। और मेरे कोड बॉडी में मैंने क्लाइंट इनिशिएट किया, ठीक है। क्लाइंट बोटो 3 क्लाइंट EC2। अभी मैं इसको ही राइट यूज करूंगा, इसके EC2 क्लाइंट नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्लाइंट के अंदर मेरा डिस्क्राइब इंस्टेंसेस फंक्शन है, राइट। तो वो मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे अभी और वही डिस्क्राइब इंस्टेंसेस पे जाओगे, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, करेक्ट, राइट। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए कि क्या करता है। तो बोला डिस्क्राइब द स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और ऑल इंस्टेंसेस। अगर मुझे मेरे इंस्टेंसेस के डिटेल्स चाहिए, राइट, तो मुझे डिस्क्राइब इंस्टेंस कर सकता हूँ। उसमें मुझे क्या पास करना है, रिक्वेस्ट मेरा है, मेरे को लिखना है रेस्पॉन्स इक्वल टू क्लाइंट डॉट डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। मैंने क्लाइंट बनाया ही ऑब्जेक्ट उधर, और मैं जो रन करूंगा उसका रेस्पॉन्स इसमें आएगा। तो मुझे बेसिकली देखा जाए तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे किस तरह के इंस्टेंस चाहिए, या कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस आईडी का डिटेल चाहिए तो वो इंस्टेंस आईडी का डिटेल दे सकता हूँ। और मतलब अगर मुझे टेस्ट करना है तो ड्राई रन ट्रू कर सकता हूँ, राइट, या ड्राई रन फॉल्स रख सकता हूँ, राइट। और मैक्स रिजल्ट कितने आइटम वो दिखाए, राइट, वो, और नेक्स्ट टोकन किस पे मूव होगा वो, ठीक है। अब इसमें अगर देखो कि पैरामीटर के बारे में डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और इसमें देखो कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप फिल्टर करके आउटपुट निकालना चाहते हो, नहीं तो मैं सिंपल डायरेक्टली, राइट, विदाउट गिविंग, राइट, एनी इनपुट डिस्क्राइब इंस्टेंस कर सकता हूँ और मुझे उसका आउटपुट राइट मिलना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कोड को ऐसे उठाता हूँ, और इसके अंदर का जितना भी फिल्टर विल्टर मुझे नहीं करना, मुझे अपने सारे इंस्टेंस के डिटेल चाहिए, वो मैं निकालता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया इतने पार्ट कोड को, ठीक है। और देखो रेस्पॉन्स क्या आता है, इस आउटपुट का रेस्पॉन्स ऐसा आएगा। रेस्पॉन्स में सारी डिटेल्स होंगे इंस्टेंस के बारे में, राइट, क्या क्या है, राइट, लॉन्च टाइम कब हुआ, वो सारे राइट डिटेल्स मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन डू सर्टेन ऑटोमेशन ओवर राइट इंस्टेंस डिटेल। तो अभी मैं अपने कोड पे जाता हूँ, जो मैंने कॉपी किया है कोड, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सिंस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सारे उड़ा देता हूँ लाइन, राइट। मेरे को सिंपल मेरे सारे इंस्टेंस के डिटेल चाहिए, मैंने डिलीट किया, डिलीट किया, ठीक है। मैंने सिर्फ डिस्क्राइब इंस्टेंसेस करके कॉल किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट फॉर सीइंग की रेस्पॉन्स क्या आता है, राइट, मैं प्रिंट रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो जो रेस्पॉन्स हमारा दिखना चाहिए जिसमें डाटा है, ठीक है। मैंने रेस्पॉन्स किया। अभी मैं इसको डिप्लॉय करके रन करूंगा, हाई चांसेस आई विल गेट एन एरर। क्या एरर मिलना चाहिए गाइस सबसे पहले? लाइब्रेरी जहाँ पे नहीं हमने इंस्टेंस के आईडी या फिर कोई फिल्टर नहीं दिया है, मतलब नहीं, आई वुड डिस्क्राइब से करने के द मोर राइट हाई रीजन इज रिलेटेड टू परमिशन। क्या मेरे लैम्डा को EC2 पे डिस्क्राइब EC2 का इंस्टेंस परमिशन। का डिस्क्राइब, हाँ, EC2 का परमिशन है क्या डिस्क्राइब इंस्टेंस करने का? नहीं है तो राइट मुझे अपने रोल जो इसके साथ अटैच है उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। बोटो 3 इज बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड बाय राइट लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के पास बोटो 3 आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी तक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लैम्डा कम्स विद बोटो 3, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं टेस्ट करके पहले देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला, an error occurred when calling the describe instant operation, you are not authorized to perform this operation, है ना। तो मतलब मुझे परमिशन नहीं है, मैं कैसे इसको जाके सही करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन, अब ऊपर जाओगे यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे यहाँ पे परमिशंस है, परमिशन में जाओगे तो आपको आपका रोल दिखेगा, ये हमारा रोल था, राइट, जो हमने बनाया। मैंने ये रोल पे गया, अभी मैं यहाँ पे इसको EC2 परमिशन दूंगा, ठीक है। अभी इस रोल के साथ कौन सा पॉलिसी अटैच्ड है? AWS लैम्डा बेसिक एग्जीक्यूशन रोल, ठीक है। मैं इस पॉलिसी पे गया, और अभी अगर करंट आप देखोगे, राइट, इसके पास क्या है एज अ पॉलिसी, इसके पास राइट लॉग, लॉग क्रिएट, लॉग ग्रुप, राइट, इसके लिए इसके पास परमिशन है, राइट, एक्शन अलाउ, इस तरीके से इसने सिर्फ एक अभी मुझे क्या है, मुझे EC2 के लिए राइट इसके लिए पॉलिसी आइदर आई कैन अटैच इन दिस एग्जिस्टिंग पॉलिसी, और आई कैन क्रिएट, क्योंकि ये मैनेज पॉलिसी, सो आई विल क्रिएट राइट अनदर इनलाइन पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, चूज सर्विस करूंगा, इसमें से मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, EC2, और EC2 में भी मैं लिमिटेशन दे सकता हूँ। EC2 में बहुत सारे एक्शंस है ना, राइट, लिस्ट, रीड, राइट,
राइट। तो हमारा डिस्क्राइब इंस्टेंस राइट पार्ट ऑफ लिस्ट है, या तो मैं पूरे लिस्ट एक्शन ले लूँ सारे के सारे इस पे सेलेक्ट करके, ठीक है, या मैं इसमें भी क्लिक करके सिर्फ जो डिस्क्राइब इंस्टेंस वाला जो परमिशन है ना वो चूज कर लूँ। यहाँ पे आपको कहीं डिस्क्राइब इंस्टेंस दिख रहा है तो डिस्क्राइब इंस्टेंसेस राइट, मैं ये परमिशन इसको देता हूँ, तो इससे मेरा काम चल जाएगा। अगर आपको रीड ऑपरेशन करना है कुछ तो रीड में जाके वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो अभी मैंने ये किया और रिव्यू किया पॉलिसी को, ठीक है। एक बार प्रीवियस में जाके एक और चीज था जो करना चाहिए, हमने एक्शन तो लिस्ट सेलेक्ट कर लिया राइट, एक डिस्क्राइब, यहाँ पे एक रिसोर्सेस है, द एक्शन यू चूज राइट, द एक्शन यू चूज सपोर्ट ऑल रिसोर्सेस। क्या होता है, कई जो एक्शन होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्स को करते हैं, नहीं तो अगर आप को ऐसा कुछ यहाँ पे एरर या कुछ मल्टीपल वो दिखेगा तो आप क्या करना है, रिसोर्स ऑल कर लेना, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा ऑल ऑल रिसोर्सेस करके, तो उसको सेलेक्ट कर लेना, सो दैट यू डोंट नीड टू डील विद लिमिटेड है बट एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज आपने दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज ऑप्शन आपको आएगी, सिंस ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ सपोर्ट ऑल रिसोर्सेज जिसका भी यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हाइड है, ठीक है। तो रिव्यू पॉलिसी किया एंड राइट क्रिएट पॉलिसी किया, इसको पॉलिसी को नाम देना है, राइट। तो एक्सेस EC2 राइट, एक्सेस टू EC2 एक्सेस EC। I think, sir, the option was upper side, all resources. नहीं उसने बोला एक काम करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनुअल एक्शन है ऑल EC2 एक्शन, मतलब EC2 सारे EC2 एक्शन को देना है, तो आप ये कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। Okay. ये अलग चीज है। एक होता है एक एक्शन चूज किया, वो एक्शन राइट किस किस रिसोर्सेस पे एक्ट करे, ठीक है। तो Okay. ये ऑप्शन वो नीचे ही आएगा आपका यहाँ पे रिसोर्सेस में, ठीक है। तो रिसोर्सेज में आपको लिस्ट ऑफ एक स्टार ऑल रिसोर्सेज करके ऑप्शन देगा, या दूसरा, तो इस वाले के लिए आपको चाहिए नहीं वो कॉन्फ़िगर करना, इसलिए उसने दिया नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बट बाकी आप करोगे तो जनरली रिसोर्स स्टार मैं आपको ऊपर वाले एक पॉलिसी में जो है ना उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू पॉलिसी, मैंने एक्सेस EC2 का नाम दिया है एंड क्रिएट पॉलिसी, ये पॉलिसी यहाँ पे इनलाइन पॉलिसी क्रिएट हो गई। मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हो रिसोर्सेज में इसने लिमिट किया है किस पे, सिर्फ एक ARN को दिया है, इस फंक्शन को दिया है ना, कि ये रिसोर्स ये दोनों राइट एक्शन कर पाए, लॉग स्ट्रीम और पुट लॉग इवेंट्स। बट अगर मैं यहाँ पे रिसोर्स स्टार कर दूं, है ना, तो वो अलग चीज Okay. है, राइट। और एक्शन में अगर मैं लॉग्स कॉलन स्टार कर दूं, लॉग्स कॉलन स्टार का मतलब क्या होगा, सारे लॉग्स रिलेटेड क्या एक्शंस अलाउ हो जाएंगे, तो दैट इज EC2 कॉलन स्टार बट नॉट रिसोर्स कॉलन स्टार, ठीक है। Okay. Okay, explore it right, these are interesting stuff right, I am मैं ये सब चीजें बहुत right interesting है, बट explore करो, ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो और भी क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो now I have added this permission to write this, now I will go to my code, okay, and now I will run my code again, ठीक है। चलो ये रन हो गया राइट, और देखो कितना बड़ा आउटपुट आया है इसको, है ना, ग्रुप नेम ये सब चीजें आई है यहाँ पे, लिमिटेड स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बट आपने जो प्रिंट किया है देखो पूरा का पूरा मशीन के बारे में डिटेल आया हुआ है, पूरा का पूरा जो मेरे इंस्टेंसेस लॉन्च्ड हैं राइट, उनका क्या डिटेल है, पब्लिक DNS नेम राइट, आर्किटेक्चर, ये सारा चीज आ गया। अब ये भी क्या जेसन ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मुझे फिल्टरिंग करना पड़ेगा तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने इवेंट्स को तोड़ा है राइट, वैसे मैं इसको तोड़ सकता हूँ। और ये जो डिटेल्ड चीजें लॉग हुई हैं, कहाँ पे लॉग हुई हैं, अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशंस में जाओगे, सॉरी मॉनिटर में जाओगे, सिंस हमने लॉग वॉच लॉग दिया है परमिशन, तो क्लाउड वॉच में आप खोल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट लैम्डा जब आप क्रिएट करते हो तो लैम्डा का अपना लॉग ग्रुप बन जाता है, किस नाम से, लैम्डा के नाम से, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता लॉग ग्रुप। लैम्डा एग्जीक्यूशन जैसे ही होता है, आपका क्या होता है, क्लाउड वॉच में एक लॉग ग्रुप आपके लैम्डा के नाम से क्रिएट हो जाता है, जैसे माई मार्च बैच फंक्शन, और यहाँ पे उसके लॉग स्ट्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी जो मैंने लेटेस्ट रन किया है राइट, उसका जो लॉग है वो इस राइट लॉग ग्रुप में इस जगह पे स्टोर है। अब इसमें मैं देख सकता हूँ कि भाई क्या हुआ, मेरे को देखो पहले एरर आया था परमिशन का वो है, और उसके बाद मेरा सक्सेस हुआ था, तो ये मेरा देखो सक्सेस का जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है वो यहाँ पे लॉग हुआ, तो ये पूरा का पूरा मेरा डाटा है राइट, जो मैंने राइट डिस्क्राइब इंस्टेंस करके किया है। तो इसमें रिजर्वेशंस मेन की है,
राइट उस रिजर्वेशन की के अंदर इंस्टेंसेस एक की है, राइट तो मैं इंस्टेंसेस के अंदर जाके राइट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा इमेज आईडी क्या है ना। अगर मुझे इमेज आईडी फेच करना है सारे इंस्टेंसेस का, तो मैं राइट इस ऑटोमेशन के थ्रू एक राइट लिस्ट प्रिपेयर करके राइट कहीं पे डंप कर सकता हूँ, है ना। तो सी लॉट ऑफ automation becomes easy right when you are aware of those boto3 libraries and use cases right to automate, तो आप कर सकते हो। now any question on this? सर जो आपने उसका लेयर्स का बताया था, हाँ हाँ तो जो लेयर्स अगर कस्टम लेयर क्रिएट करके कोड का हम उसको डिप्लॉय करते हैं, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक साइज फॉर दैट यस कि इतने यस एम? यस हाँ मतलब उसका लिमिटेशन है, मतलब इट शुड नॉट बी राइट ऑफ साइज bigger than some GBs. I'm not remember actual, but yes, limitation is there. I will ओके say that there ओके, is आई से limitation. Yeah. So do it. Actually क्या करना, बहुत सारे जर्नल मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए लेयर के लिए तो मैं आपको दे सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या है। अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई करके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उसका ऑलरेडी स्टेप्स है तो आप वो फॉलो करके इजिली कर सकते हो। बट एक्सप्लोर करो ये सब चीजें, ठीक है, काम आएगा अगर आप राइट इंटरव्यू में जाओगे, राइट जहाँ पे AWS प्लस डेवऑप्स हायरिंग चल रही है, तो ये इस तरह के नॉलेज क्वेश्चंस आएंगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से कि क्यों है, ठीक है। ओके, नाउ एनी क्वेश्चंस ओवर लैम्डा? यहाँ पे दीपक एक क्वेश्चन था। वो जो कोड था ना, एक एक मिनट कोड दिखाना। हाँ यहाँ पे कोड में ना रीजन मेंशन किया ना कुछ भी मेंशन किया, बस परमिशन देने से वो जो भी अकाउंट में सारे इंस्टेंस के डिटेल थे वो पेज के बिल्कुल उसने वो ये किए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो सी मैं ओके। जब ये ऑब्वियसली परमिशन है, और मैं ये जो लैम्डा क्रिएट कर रहा हूँ मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने एनवी रीजन पे किया है ना। हम्म। बट जब मैं ऑटोमेट करूंगा और मुझे किसी स्पेसिफिक रीजन में डालना है तो मेरे को रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये तो मैंने कंसोल ओके। से किया है ना। तो मैं कंसोल में किस रीजन में हूँ, यूएस ईस्ट वन एंड पे। ऑब्वियसली वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। वन थिंग मोर राइट, जनरली आपने पूछा इसलिए क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इसको इसको वेरिएबल्स भी पास करते हैं लैम्डा को, ठीक है। तो लैम्डा का जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने डाला है क्या, पहले तो नीचे ही दिखता था, यहाँ पे आपको इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप ऑटोमेशन के थ्रू इन्वायरमेंट वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब जो फंक्शन में यूज करना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे रीजन पास करता हूँ, ठीक है, और मैंने रीजन का वैल्यू दिया है यूएस ईस्ट वन, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ये इस नाम से शेयर है और मैं इसको कोड पे एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने जब डिप्लॉय किया मेरा कोड तो मैंने राइट ये डाला, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देयर इज इनबिल्ट लाइब्रेरी कॉल्ड ओएस, राइट। एंड अगर मुझे यूज करना है मेरे कोड में, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक रीजन नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ सेम नाम से, राइट, और कर रहा हूँ इंपोर्ट, नॉट इंपोर्ट ओएस, तो इंपोर्ट कर दिया। ओएस के अंदर एक मेथड है कॉल्ड इन्वायरन, राइट, और बिग ब्रैकेट में द की विच इज व्हाट, रीजन, है ना। तो इस रीजन नाम पे मैंने स्टोर किया है, तो मैंने इस नाम से मतलब क्या किया, इसमें डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ किसको, रीजन को। तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरा रीजन, तो मैंने इसे बोल्ड में रीजन लिखा है एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, एंड माय वेरिएबल नेम। तो मैंने इंपोर्ट किया है ना, और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू मैं अपने कोड में यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि हाँ वो उससे एक्सेस हो पाएगा। ये मैं इसको डिप्लॉय किया एंड टेस्ट किया। नाउ यू कैन सी राइट वेयर इज रीजन, रीजन कहीं दिख नहीं रहा है, क्यों बात है, मेरे हाइड हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ, रेस्पॉन्स जो प्रिंट हो रहा है ना उसके कारण गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया है, और इसको भी मैं, इसको नहीं भी कमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रिंट को कमेंट किया हुआ है इसमें। डिप्लॉय टेस्ट,
अभी दिख रहा है आपको रीजन यहाँ पे, है ना? तो मैंने क्या वेरिएबल से इंटरपोलेट किया राइट अपने कोड पे और उसको यूज कर सकता हूँ. तो दिस इज द वे राइट वी कैन राइट मेक अ कॉन्फ़िगरेबल लैम्डा फंक्शन आल्सो. ठीक है. ओके. यस प्लीज. Yes, where we can check the pricing for these, all of these. See, AWS have its price calculator page. Okay, and the pricing is right. There are certain million of requests is free, right, for Lambda, right? Okay. Uh, First 1 million requests are first free. 1 million request is right free, and over that right you get charged. But remember, free is not free. You are getting charged, right? I think 0.01 right for the memory right that you are using. So memory configuration कहाँ पे है? यहाँ पे देखो जो टाइम आउट और वो था ना वो हमने नहीं देखा ना, तो वो देख लेते हैं. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, देख रहे हो यहाँ पे मेमोरी 128 एमबी यूज Yes. कर रहा है और टाइम आउट 3 सेकंड का है. अगर आपका कोड 3 सेकंड से ऊपर लेता है टाइम राइट, वो टाइम आउट में आ जाएगा. जैसे कि अगर मैंने कोड के अंदर आई डोंट नो इंपोर्ट डेट टाइम फॉर स्लीप आएगा क्या उससे? इंपोर्ट ओएस में स्लीप होता है ना, ओएस डॉट स्लीप यूज करके देखते हैं. ओएस डॉट स्लीप, इसको मैं दे देता हूँ 10 सेकंड. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. OS has no attribute sleep. OS dot system sleep है क्या? OS Python OS module sleep. I think system command रन करने के मतलब command रन करने के लिए system होता है. OS module sleep OS dot system. तब तक मैं ये सोचेगा तब तक मुझे लग रहा है कि यही है OS dot system and sleep command. ठीक है, OS dot system right? और सिस्टम के अंदर हम कॉल कर देंगे स्लीप कमांड विथ स्लीप 10 सेकेंड्स. Just what I have a feeling, but let's see. Invalid syntax. देखते हैं क्या. पाइथन स्लीप नहीं चाहिए मुझे, ओएस स्लीप चाहिए. ओएस मॉडल पाइथन ओएस. Sir, it's showing time dot sleep, right? Like, हाँ, टाइम डॉट स्लीप इज पाइथन यूटिलिटी, बट डेट टाइम डालना पड़ेगा राइट. okay. बट डिफॉल्ट पता नहीं वो टाइम सपोर्ट करता है कि नहीं. इंपोर्ट पाइथन सिस्टम मॉड्यूल import says running command using OS module. Just give me 1 minute, मिल जाएगा वो. So OS dot system ls minus l. Okay, हाँ सही तो कर रहा था बट डबल कोट्स नहीं लगाया. तो ये डबल कोट्स में डालने का. ठीक है, डिप्लॉय किया, टेस्ट किया, चल रहा है. अभी टाइम आउट मारेगा. देखो हमारे टाइम आउट किया ना इसने. Yes. अभी मुझे इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरा कोड ले रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके राइट एडिट किया, इसको मैं 10 सेकंड या 15 सेकंड कर दूंगा या 1 मिनट कर दूंगा, है ना. तो 1 मिनट 3 सेकंड कर दिया मैंने इसको और इसको सेव कर दिया. अब ये टाइम आउट नहीं मारेगा. 10 सेकंड तक स्लीप करेगा और उसके बाद आउटपुट आ जाएगा. यस, ठीक है ना. यू गॉट इट. Yes. चलो बढ़िया. Okay, now what is the time? I think it's enough for today, right? ज़्यादा नहीं लेते हैं, right?
इस पे कंसंट्रेट करो और आज थोड़ा इस पे राइट लैम्डा पे स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में यू विल राइट गेट मास्टर इन इट, इट इज नेवर एक्सपेक्टेड आल्सो। सो जस्ट आई विल से राइट डू मोर ओवरव्यू। आप एक छोटा सा कोड लिख के रन करके राइट एटलीस्ट उतना करो। इवन इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड एक बेसिक बोटो लाइब्रेरी यूज करो राइट। मे बी मैंने EC2 किया है तो आप S3 पे ट्राई करके देखो कि लिस्ट बकेट, आप एक बकेट बनाओ राइट आपके रीजन पे, और राइट S3 LS कमांड वहाँ पे रन करके देखो राइट। या मतलब बोटो S3 का जो फंक्शन है राइट, लिस्ट बकेट करके राइट, वो बोटो 3 में सर्च करो और राइट उस तरीके से राइट करके देखो। तो it will just start right adding some confidence right in you, you can deal with this right। तो ये थोड़ा hands on करना, ठीक है। You can take maybe right this time maybe Yes. next 20-30 minutes जो आपने schedule किया हुआ है right, उसमें at least try करो ये, ठीक है। Sure. Deepak, Anything? yeah, Deepak, one use case is there. Suppose there are few files, two three files in S3, and want to compare with DB output. So can we do that using Lambda function? Yes, we can do that. Two things. Uh, in which database your data is? MySQL. MySQL of AWS or where? Yes, yes, in AWS. Okay, so you have to see right here. Okay, so there is a RDS support also right for Boto 3. Okay, 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 so you can run queries right, and okay, if you get your output right query within 15 minutes, then yes. But if your okay, query is very extensive, then Lambda is not the right approach. Okay, okay, so it should be right, query should be right very optimized right, and right within that 15-minute period of time, so that you have to do other calculation also na? So okay, you want to write map or right compare over some right file that you can store on S3। जो भी आप जिससे कंपेयर करना है वो फाइल आप S3 पे डंप कर सकते हो, S3 से पुल yeah, करके फिर उनका जो आउटपुट है वो कंपैरिजन कर सकते हो राइट, यूजिंग पाइथन okay, राइट यूटिलिटीज जो भी है, ठीक है। okay, सो इट्स पॉसिबल, okay. बट वही है थोड़े कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको Yeah, correct. समझना पड़ेगा। Okay. think one more thing, like in generally, as for DevOps roles and responsibility, are we using this very frequently, or as a AWS developer, we are using this Lambda See, thing? what I see, right? I'm telling you, I have a team of say currently 8 members, right? And when we hired, right, we never thought. See, this is what the inception is happening, right? Where we are starting. I'm just giving you a very practical example, right? Which I am facing and which I am observing. So we hired right most of the resources right who were in some or other way right doing right support activities right in terms of development skill, they do not have much right development skill. Even right when we were evaluating, we consider that we will make them or train them, because we are not getting the person right with that बैलेंस यू कैन से स्किल सेट ना। किसी का हो सकता है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज बहुत अच्छा है बट ऑटोमेशन नहीं है उसके पास, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंस वेरीड फ्रॉम 2 to 10 years of experience। तो ऐसे बहुत challenges हैं अभी इंडियन मार्केट में। The work that comes right in this AWS DevOps model right in which automation will have to be right there right? करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टास्क ऐसे आएंगे इवन मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपको ये थोड़े से स्क्रिप्टिंग और राइट पाइथन स्क्रिप्टिंग स्किल रिक्वायर्ड है, और वहाँ पे क्या होता है रिसोर्सेज फेस लॉट ऑफ चैलेंज। It's not about intent but yes lack of automation knowledge. Then what is the main idea? So to train them right, to right enhance them, upskill them, so that right they can start taking them up, and slowly what happen in right 4 5 6 months you will see that what we are also seeing right a lot of change. Matlab, now they're interested, they are doing development right, they are making changes, and they're also happy because now they are getting confident in terms of right automating right। तो ये चीजें क्या होती है, परकुलेट होती हैं अगर आप राइट उस इन्वायरमेंट की तरफ मूव करना चाहते हो। और नीड वही है ना फ्यूचर में, अभी आप कहीं भी जाओगे तो विदाउट ऑटोमेशन विदाउट कोडिंग राइट
नहीं कर पाओगे, और डिमांड यही है। आप कहीं पे भी जाओगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, कुछ ना कुछ ऑटोमेशन टास्क तो आपको प्लेट में आने वाले हैं। Okay. No, Deepak, actually, for CI/CD thing, I'm taking an example like using Jenkins and Terraform. We are using as a development tool, but talking about specific to Lambda. So, Yes, yes, it is right. I would say depends upon right your design approach, right. कई जगह पे हम लोग ने देखा है कि we want try to save money, right, in various context, right. Then yes, we fall in right for Lambda. Many cases, right, creating certain solution, right, where right we first think about right, should we have our instance created for running those workloads or can be handled using Lambda. तो ये comparison होता ही है, अगर Lambda जीत गया तो Lambda जाएगा, Lambda लेगा. okay, okay. Any more questions, guys? No. Then do this. I will share this recording right in a while. But please do practice them. We are very close to right S3. Once S3 is done, right, I will do that lab and then we are going to move toward Git. Okay. Or you want Python first, so it's your choice. So generally I do Git and then Python. So just want to take everyone's opinion. Git. Okay, yes. So we will start. That would be a nice pattern also, because when we have a knowledge of Git, right, whatever we will learn or you will be learning, right, in Python can right store there, basically, right. So we will do that, right. After this AWS, we will jump to right Git and then right Python basics, and then we will jump to Maven, or you can say specifically build tool, and then we will go to Jenkins. Okay, guys. Thank you so much. Bye. Thanks. Bye.